video, we are going to read The Wonder World of Science, text A, Cures for Common Cold by Harold S. Diehl. What is common cold? Common cold is not a disease at all. It has no power to kill a man. It is not dreadful even like AIDS and cancer. Still, people suffer a lot due to this common cold because it causes nasal congestion, discharge. Common cold is not a disease at all. It has no power to kill a man. It is not dreadful like AIDS or cancer, but still, people do suffer a lot because due to nasal congestion and nasal discharge, they become shameful or frequent coughing and headache make them restless. Despite general skepticism about cures for common cold, millions of dollars worth of commercial remedies are sold in the country every year. So ए पैराग्राफ रे कौन लिखा है ना बहुत जनरल बिलीफ परे भी माने क्योर ऑफ कॉमन कोल्ड उपरे कॉमन कोल्ड रो कौन रेमेडीज हे परिबो तापरे बहुत सारा जनरल बिलीफ परे भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मेडिसिन सोल्ड आउट होची ईच एंड एवरी कंट्री रे old fashioned cures like asafoetida and camphor are no longer in watch. The old remedies like hingu asafoetida mane hingu and camphor mane कर्पूरा आउ use रे भी आसुनांती watch means use but in their place has come a whole new arsenal of popular remedies. तो तांको जगह रे बहुत सारा popular and lot of popular medicines आछि like vaccines, vitamins, nasal medicines and other drugs. तो ता जगह रे drug content medicines, vitamins, vaccines, nasal congestion पाइंकी nasal medicines भी आसीची. Yet careful investigation shows that many of the medicines or widely advertised remedies now on the market are utterly worthless. तो आमाने कौन अबिका जो मेडिसिन्स गुड़ाक एडवर्टाइज होउची ता भितर बहुत सारा मेडिसिन्स एमती अछंती जार वैल्यू ही किछि नै जो गुरा कंप्लीटली वर्थलेस हे गलेनी से माने यूज रे ही आसुनांती. सम ऑफ देम इन फैक्ट मे बी डेफिनेटली हार्मफुल. तो ता भितर किछटा एमती भी मेडिसिन्स अछंती जो गुरा कंप्लीटली हार्मफुल आम बॉडी पई. इज देयर एनी रेमेडी देन ऑफ वैल्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड. तो एमती किसी मेडिसिन्स अच्छी कि जोटा कॉमन कोल्ड को क्योर करने हेल्प करिबो. देयर इज नो मेजर दैट इज यूनिफॉर्मली इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कॉमन कोल्ड. तो सेमिति किसी मेडिसिन्स बाहर ही नहीं जोटा कंटिन्यूअसली रिलीफ दे परिबो कॉमन कोल्ड ठारू. ओल्ड स्टडीज हाउएवर डिड रिवील वन ग्रुप ऑफ स्टडीज रे हमें पाइचु कि मॉर्फिन जोटा गोटे डेरिवेटिव ऑफ opium, morphine which is a derivative of opium, showed excellent result but was discarded because of its danger. So थरे कौन हेतला ना आमे पाइथिलु गोटे स्टडी रे कि मॉर्फिन जे गोटे opium रो डेरिवेटिव सी बहुत हेल्पफुल थिला to cure common cold but it was dangerous for health. But several other derivatives of opium which are less toxic and carry no practical danger of habituation proved to be definitely valuable. In one first study, codeine and papaverine both gave evidence of value in the treatment of acute cold. तो कौन है ए पैराग्राफ रे यह लिखा है कि ओपियम रो आउ सब डेरिवेटिव्स which are less toxic than morphine आउ तांकर माने ओपियम कौन हैबिचुएशन रे पड़ी गले ओपियम रो आउ सब डेरिवेटिव्स मॉर्फिन को छाड़ी की तार हैबिचुएशन रे पड़ी गले भी किसी प्रॉब्लम नथिला. दे वर प्रूव टू बी वैल्यूएबल. देन इन द फर्स्ट स्टडी कोडेन आउ पापावराइन जो गुरा ओपियम रो डेरिवेटिव बोथ गेव एविडेंस एंड वैल्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट कोल्ड. माने एक्सेस कोल्ड जहाँ को हो जाइथिबो कोडेन आउ पापावराइन बहुत हेल्पफुल थिले. नीदर वाज सो इफेक्टिव as morphine. So से दीटा को इतने इफेक्टिव न थिले morphine तुलना रे and since both are quite different chemically it was decided to try them in combination. तो कौन डिसाइड हेइतिला दीटा जाको morphine भलिया माने समान न थिले but जदियो तांको दी जन को कॉम्बिनेशन रे निया जिवो काकू कोडेन और पापावराइन को then they can be effective. The codeine papaverine mixture proved to be after morphine the most valuable
of all the cold medicines. तो कोडिन और पापावेराइन मॉर्फिन परे बहुत ही वैल्यूएबल मेडिसिन हो गले कोल्ड पे. Then a preparation consisting of 1/4 grain of codeine and 1/4 grain of papaverine was finally selected as the most effective doses. तो कौन 1/4 grain of codeine along with 1/4 grain of papaverine को select करा हला as the effective dose to cure common cold. Of 1,500 students who were given this preparations for the treatment of the acute head cold, तो जहाँ को मुंड बिंधा होतला थंडारू 1,500 स्टूडेंट्स को कॉम्बिनेशन दिया गला कोडेन और पापावेराइन रो टू चेक who were given to the preparation for the treatment of acute head cold. 72% reported definitely improvement or complete relief within 24 or to 48 hours. तो 72% of the students कौन कले recover हे गले और completely cure हे गले within 24 to 48 hours. Okay, the chief beneficial effect was marked. The chief beneficial effect was marked decreased or complete disappearance of the nasal congestion and discharge. तो कौन हला से छुआंगो धीरे जो माने nasal congestion होतला कि nasal discharge होतला completely बंद हो गला with the relief of these symptoms. तो से symptoms ठारू पूरा छुटकारा पाई गले. In many cases, the process of the common cold seemed to be arrested and the secondary stage of the protracted nasal discharge avoided. तो कौन जो भी स्टेज रो कॉमन कोल्ड थिला से सब क्योर हो गला. While taking this medication, most of the students were up and about attending classes. Had they remained in the bed while using it, probably that even better result might have been obtained. तो से छुआ मैंने कौन करथिले ना ये मेडिसिन को नेला पर से तंग काम करथिले पढुथिले क्लासेस अटेंड करथिले जदि से रेस्ट नहीं थांते बेड रेस्ट नहीं थांते तो तांको भी इवन इफ मोर इफेक्टिव रिजल्ट देखा जाई थांता. The either in the course of the cold that their preparation is used, the larger the proportions of the good results. So the earlier in the course of the cold, तो सी कोल्ड रे जदि ये प्रिपरेशन टा यूज ही थांता बहुत बेटर रिजल्ट दे थांता. दिस प्रिपरेशन कॉमनली कॉल्ड कोपाविन. तो कोडिन आउ पापावेराइन रो प्रिपरेशन को कौन कुआ जाउला कॉम्बिनेशन को कौन कुआ जाउला कोपाविन कुआ जाउला. is not advertised to the public. तो publicly एटा advertise ही नथला. It is available through physicians who should decide when and in what doses it should be used. So कौन कोपाविन advertise ही नथिला but से गुरा physicians को पाखरे chemist को पाखरे थिला आउ से माने जणे दोथिले लोक माननको कि केतबळे को टाइम रे and in how much amount नबा कथा. Since these studies were made, confirmatory reports has been published by several other investigators. So ए studies गुरा जंती गोटे confirmatory result दवा पई लागिले Dr. Russell Cecil of New York and Fritz Hutter of Virginia both found that the codeine and papaverine mixture was partially beneficial if used by their patients at the very beginning of the infection. So Dr. Russell और Dr. Fritz कौन बाहर करथिले ना कोडेन और पापावेराइन रो मिक्सचर सेतबेले बेनिफिशियल जदियो जने फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉमन कोल्ड रे ताको कंज्यूम करिवो. In this connection too, it is of the interest to recall the statement that often users rarely have cold. तो सी ए खोजु खोजु कौन सेंटेंस टाको पाइथिले ना often users माने केबे हेले भी कोल्ड माने तांको केबे कोल्ड हार्म करे नहीं. They rarely get cold. D. Quincy, in his book Confession, wrote that during the year in which he had taken opium, he never once caught cold. तो डी क्विंसी कौन कही तांको कन्फेशन गोटे बुक थिला तांकर से सीटी कौन लिखिथिले ना सी जो वर्ष ओपियम कंज्यूम कले तांको केबे हेले भी कोल्ड धरिलानी. As the phrase is not even the slighter cough, तांको गोटे छोटो कास भी हेलानी. But after discontinuing the use of opium, a violent cold attacked me and cough soon after.
तो आगे तांको थंडा हैला तापर तांको कास होला बहुत सीवियर थंडा हेतला तांको जेतबेल से ओपियम यूज करबा छाड़ दे सिमिलर येन राइट्स कैक्टियो इन द डायरी ऑफ एन एडिक्ट ओपियम ही सेज इज अ सीजन तो येन कौन लिखिथिले इन द डायरी ऑफ एन एडिक्ट से लिखिथिले कि ओपियम गोटे सीजन भलिया लाइक द पर्सन और द स्मोकर हु कंज्यूम्स ओपियम तांको वेदर चेंज रो किछि फरक ही पड़ेनी द स्मोकर्स नो लॉन्गर सफर फ्रॉम चेंजेस इन द वेदर ही नेवर कप्स कैचेस कोल्ड तो सेमानंको कास कि ठंडा बिल्कुल धरे ही नहीं less effective but still of moderate values were several other opium derivatives. In addition to codeine alone and papaverine alone, it was found that powdered opium and the old-fashioned Dover powder, combination of powdered opium and powder epicac, was beneficial. ना कॉमन कोल्ड रे जो कोडीन अलोन जदि कंज्यूम करा जाए सेपरेटली आउ पापावेरान अलोन कंज्यूम करा जाए सेपरेटली से दीटा को छाड़ी कि इफ अ पर्सन इनटेक्स powdered opium along with the combination of Dover's powder. What is Dover's powder? Dover powder is again a combination of opium powder and the powder ipecac. ताकू जदियो कंज्यूम कला then it would be beneficial. Quinine also come to be included in the group of moderately valuable medications. तो quinine भी तापरे आउ गोटे moderately valuable medications भितरे जणा गला. The preparations of the individuals who reported complete relief or definite improvement after the use of the preparation range 57% for the powdered opium. The powdered opium को लोक मैंने 57% रेट कले बिकॉज 57% ठीक है गले powdered opium कंज्यूम करिकी एंड 50% क्विनाइन कंज्यूम करिकी ठीक है गले कोल्ड एंड कफ रो. Finally, certain general hygienic measures are helpful in the treatment of cold. तो कोल्ड को ट्रीट करिया पे ये सब मेडिकेशन छड़ा किछ गोटे जनरल वे भी अच्छी जनरल हाइजेनिक मेथड्स भी अच्छी. गोइंग टू द बेड एंड रिमेनिंग देयर अंटिल द रिकवरी इज गुड एडवाइस. तो जन को जदि कोल्ड एंड कफ होइछि से निज रूम रे आइसोलेटेड हेकि निज बेड रे रहिबो. व्हाई एटा काहेकि से करिवो काहेकि ना आ धर स्नीज कला कि कफ कला कि ताको ठंडा होइछि को जिनस को ऑब्जेक्ट को छुई देला तो ता कांटेक्ट रे जो अन्य पर्सन भी आसीबो ताको भी कोल्ड एंड कफ हबार बहुत चांसेस अछि. सो आइसोलेटेड हेकि रहिबा कफ एंड कोल्ड बेले इज अ गुड ऑप्शन. द वैल्यू ऑफ द बेड रेस्ट लाइज इन द protecting others from the exposure, in increasing general resistance and in keeping the body warm. तो देह को गरम रखिबारे भी हेल्प करे. Bed rest during the acute stage of cold supplemented by such other treatment as is indicated would diminish their severity, limit their spread and reduce the frequency of complications. तो जड़े आइसोलेटेड हेकि बेड रेस्ट नेले ड्यूरिंग कफ एंड कोल्ड ताको कौन हेल्प करिवो ना तो कफ तो एक रे आउ का कफ एंड कोल्ड स्प्रेड हेबनी अन्य पर्सन्स को. सेकेंड कफ एंड कोल्ड को लिमिटेड रखिबो तुम बॉडी को वार्म रखिबो आउ कॉम्प्लिकेशंस कमे दबो. धर हेडेक होची ना माने नाजल फ्लो होची सेगरा सब कमे दबो. देन हॉट बाथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड्स मे consist of the hot water, hot air or steam. So इटी कौन लिखा है हॉट बाथ माने गरम पानी रे गाधेले भी कोल्डटा कमी जाए बिकॉज तुम ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए. डायलेट हेले ब्लड फ्लोटा इंक्रीज हम सो से ब्रीथ करिबारे हेल्प करिवो स्टीम हरिका नेले. सो द इफेक्ट ऑफ दिस बाथ is to dilate the blood vessels of the skin and to increase blood flow through them. As a result, nasal congestion and stuffiness are reduced. तापरे similar effect may be obtained with massage or other forms of physiotherapy with hot or cold compressed mustard plasters and certain medicated ointments. तो धर सोरिष तेल के मालिश करदेला कि मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स आनिकी तुम बॉडी रे मसाज करदेला देन ऑल्सो तमर कोल्ड किछि लिमिटेड कम हो जिवो. If such treatments are followed by rest in the bed with sufficient cover to the
प्रिवेंट कोल्डिंग तो तुम जदि यही सब ट्रीटमेंट सहित हॉट वाटर बाथ है देन फिजियोथेरापी है देन मस्टर्ड ऑयल रो मसाज है तो तुम बॉडी को वार्म रखा सहित तुम जदि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बेड रेस्ट नेल देन इट विल क्योर द कॉमन कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. Okay, effect is prolonged and the possibility of there being more than temporary benefit is increased. Exercise frequently utilized by the athletes to sweat out. तो कोल्ड जो होता है एथलीट्स मैंने कौन करती स्वेट आउट कर दिखती. अ कोल्ड हैज़ सिमिलर इफेक्ट तो तंकर स्वेट रे बाहर जाए बट यूजुअली द सिम्पटम्स रिटर्न व्हेन द बॉडी गेट्स चिल्ड. तो एथलीट मान बॉडी जो चिल्ड हो जाए तो से अगेन से कोल्डटा रिटर्न कर जाए एंड देन द कोल्ड मे बिकम इवन मोर सीवियर दैन बिफोर तापर से कोल्डटा आउरी सीवियर हो जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे अहेड. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.